हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजीत अग्रवाल और आज की इस क्लास में क्लास 12 केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। This topic is taken from chapter Aldehyde and ketones. First, we will have to discuss what is alpha hydrogen, which is a necessary condition for this type of reaction. What is alpha hydrogen? An alpha hydrogen is the first carbon that is joined to functional group. कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसे जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। हम लोग बिना अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा कि अल्फा कार्बन क्या है। अल्फा कार्बन इज दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली ज्वाइंड टू फंक्शनल ग्रुप, like in case of aldehydes or ketones. It is known that both are carbonyl compound and carbonyl compounds contain C double bond O group. If you have aldehyde group, then you will have CHO as a functional group, and if you have ketone group, then you will have C double bond O group. And carbon attached to this functional group, तो देख सकते हैं कि एल्डिहाइड्स में CHO ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है और कीटोन में CO, तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन वही होगा हमारा अल्फा कार्बन, मींस दिस। ठीक है, तो इस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैच्ड। हाइड्रोजन अटैच्ड दीज अल्फा कार्बन आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। ये होंगे अल्फा हाइड्रोजन। If you have a molecule of CH3CHO like this, this is CH3CHO. Its common name is acetaldehyde. And what will be its IUPAC name? Because it contains two carbon, its IUPAC name is ethanol. So you can see in acetaldehyde, functional group is CHO group, while there is only one alpha carbon directly attached to CHO group, along with 3 alpha hydrogen are there. Similarly, if you have acetone, the formula of acetone is CH3COCH3. So one of the CH3 will be on left hand side and other CH3 will be on right hand side. So how many alpha carbon are there? Because functional group is carbonyl group, which is in the middle, and 2 alpha carbon are there. One is this and other on right side, along with 3 alpha hydrogen are attached to each of alpha carbon. Alpha hydrogen number 1, alpha hydrogen number 2, alpha hydrogen number 3 in case of a stone. While on right side again 1, 2, 3 alpha hydrogen are there. Similarly, in acetaldehyde, how many alpha hydrogen are there? Again 3, 1, 2, 3. Understood? What is alpha hydrogen? It is a necessary condition for aldol condensation reaction. Similarly, if I take propanol, in propanol there are 3 carbon, at the end of which there is functional group CHO. CHO is aldehyde and its functional group is CHO. IUPAC name is propanol. तो अभी बताया था ना, डायरेक्टली अटैच कार्बन अटैच डायरेक्टली टू फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा कार्बन, and along with it, how many alpha hydrogen will be there? Because valency of carbon is 4, the only 2 hydrogen you can attach to it. So there are 2 alpha hydrogen, 1 and 2, while second carbon attached to functional group, this is called beta carbon. First one is alpha, then is beta, and there is no role of this beta carbon in aldol condensation. ठीक है, बस पता होना चाहिए कि ये बीटा हाइड्रोजन भी होता है। तो दिस इज द property of alpha hydrogen. What are alpha hydrogen? It is clear now. Now we will discuss what is aldol condensation. This is one of the most important reaction for class 12 chemistry. किसी भी वे में क्वेश्चन आ सकता है कि write about aldol condensation or what happens when acetaldehyde
और एसीटोन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे मेन प्रॉपर्टी ये है, पहचान में क्या आएगा कि एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया जाएगा लाइक एल्डिहाइड और कीटोन, और साथ में डाइल्यूट अल्कली लाइक डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट KOH। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और होती है कैनिजारो, उसको बस कॉन्सेंट्रेटेड देते हैं। तो डाइल्यूट NaOH इसकी प्रॉपर्टी शो करेगा कि हमें एल्डोल कंडेंसेशन शो करना है। तो व्हाट इज दिस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? एल्डिहाइड एंड कीटोन containing अल्फा हाइड्रोजन, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, undergo self condensation in presence of dilute alkali to form beta hydroxy ketone or beta hydroxyaldehyde. This reaction is called aldol condensation reaction. But one should you should know that there is no alpha hydrogen in formaldehyde. So this is the reason that formaldehyde will not undergo aldol condensation reaction. Understood? So here I will start with an example of acid aldehyde, because acetaldehyde अभी हम देख चुके हैं लास्ट स्लाइड में कि acetaldehyde में सिंगल अल्फा कार्बन होता है along with 3 alpha hydrogen are there. So I will take this is first molecule of acetaldehyde, CH3CHO. I will write like this because we have to shift the bonds here as well as the hydrogen atom. This is first molecule of ethanol. Now take other one in expanded form, means structural form, CH3CHO. You will write CH3 like this with 3 single covalent bond with carbon, alpha carbon. Next is their functional group. You can write it like this, CHO. You will have to do this reaction in presence of dilute alkali like dilute sodium hydroxide or potassium hydroxide. It will undergo condensation reaction, or it will carry out. One alpha hydrogen from this side will go to this oxygen, as well as this bond from double bond will come in between 2 carbon, this carbon of carbonyl group and this carbon of alpha carbon of other molecule. So what product it will form? First CH3 will remain same, there will no change in it. Then single bond, यहाँ डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है कार्बोनिल ग्रुप पे कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा O, और एक हाइड्रोजन शिफ्ट किया है तो बन जाएगा OH, हाइड्रोजन फ्रॉम बिलो, और डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड हमको यहाँ पर फ्रेम करना है, जो ये बताया था कि डबल बॉन्ड का ये बॉन्ड यहाँ पर था वो यहाँ आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सी, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन लेंगे, and attached to them are remaining number of hydrogen atoms. 2 hydrogen atom will left behind क्योंकि एक कैसे शिफ्ट हो गया O के पास, and finally CHO. Understood? So this is called, this is beta hydroxy. ठीक है, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि बीटा मीन्स ये, क्योंकि अगर हम इसको फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये अल्फा कार्बन होगा और ये बीटा कार्बन होगा, बीटा के साथ OH ग्रुप जुड़ा है तो ये बीटा हाइड्रोक्सी हो जाएगा, और CHO का एल्डिहाइड ग्रुप है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो जाएगा। इसको IUPAC नेम में लिखना ज्यादा इजी रहेगा, तो उसी फॉर्म में हम इसके लिखेंगे IUPAC नेमिंग में। IUPAC नेमिंग रूल पता होगा, पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते हैं और उसमें हाई प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप की तरफ से काउंटिंग शुरू कर देते हैं। तो हाई प्रेफरेंस का होगा CHO ग्रुप, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। जब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का वर्ड रूट होता है ब्यूट, पहले वर्ड रूट लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि और सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, you can write it as butane. Okay, you can write it as butane. Butane, at first place there is aldehyde group for which you will put al,
1 al. एंड थर्ड प्लेस पर OH ग्रुप है, क्योंकि लो प्रेफरेंस में तो OH का नाम और नहीं होगा, यहाँ पर नाम इसका होगा हाइड्रोक्सी। ठीक है। नाउ it on heating it will lose its water molecule from here. One water molecule it will lose on heating, leaving behind croton aldehyde. What will left? ये इन्होंने का जब यहाँ से H ये O हटेगा तो इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री जाएगी, कार्बन 2 कार्बन 3 की, तो एक डबल बॉन्ड आ जाएगा इस बीच में. Now this will be CH3, no change here, but this carbon and next carbon has one valency free, तो यहाँ पर आके डबल बॉन्ड, hydrogen attached and CHO group. So this is called proton aldehyde. Its name is proton aldehyde. Otherwise you can write its a common name, but कि कहीं conversion based पर आ गया कि इथेनॉल से proton aldehyde बनाओ, तो हमें एक common name पता होना चाहिए. IPAC rule is simple, तो IPAC rule के according इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन का again, it is common name, put this in bracket, ब्यूट. हम कार्बन काउंट करें यहाँ से 1 2 3 4, तो सेकंड थर्ड के बीच जो डबल बॉन्ड है तो ब्यूट के साथ तो आएगा प्राइमरी सफिक्स में सेकंड प्लेस पर इन 1 al. Put hyphen mark between number and the name. Okay. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल टेकिंग इथेनॉल. इसी तरीके से हम एसीटोन लेकर के इसको कर सकते हैं. अगर हम इस H की जगह पर CH3 ले लेंगे तो ये बन जाएगा एसीटोन. इसको भी हम एक रिएक्शन करके दिखा देते हैं. Aldehyde, ketone, acetaldehyde and ketone both will perform aldol condensation reaction, but benzaldehyde and formaldehyde do not. You will write acetone in this manner, so it will be easy to shift. One of CH3 group again in acetone will write in expanded form. This is alpha carbon. Why it is called alpha carbon? Because it is next to functional group, this carbon group, okay, and CH3. So in every reaction, you will take a 2 molecule of aldehyde or ketone. Again, as per rule, condensation reaction takes place in presence of dilute NaOH and shift H there. In presence of dilute NaOH. So one of this alpha hydrogen will shift there and bond will shift between 2 carbon. So what will left behind? Product form will be similar, but below side वहाँ पे एक CH3 ग्रुप होगा. जैसे यहाँ H था ना, यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाएगा. With O, you will put hydrogen that has been shifted from this alpha carbon. यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड आएगा. इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बचे क्योंकि एक तो शिफ्ट हो चुका था. Rest will remain same. C double bond O, CH3. Again, you can do it its name by IPA system. On heating, again water molecule will lost from this side, leaving behind double bond between the 2 carbons. CH3, C, CH3, double bond will be here. This carbon along with 1 hydrogen below, and no, only 1 hydrogen will be there. CO CH3, C double bond O, CH3.
आईयूपीएसी सिस्टम से अगर इसको नेम करेंगे तो उसका नेम क्या आएगा? कार्बन काउंट करेंगे हम लोग फ्रॉम द साइट ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, 1 2 3 4 5। व्हाट विल बी इट्स आईयूपीएसी नेम? हम देख सकते हैं कि 5 कार्बन चेन है तो 5 कार्बन का वर्ल्ड ग्रुप तो बनेगा पेंट। 3 और 4 भी डबल बॉन्ड है तो पेंट के साथ लगाएंगे 3 इन हाइफन, देन सेकंड प्लेस पर कीटोन ग्रुप 2 ऑन, और बचता है के लिए प्रीफिक्स CH3 जो फोर्थ पेज पे लगा हुआ है उसको स्टार्टिंग पुट कर देंगे 4 मिथाइल। So these were the example of Aldol condensation reaction. If you have any problem, please put your question in the comment box and I will explain you. नेक्स्ट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे हम देख चुके हैं एल्डोल कंडेंसेशन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी होता है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन उस कंडीशन में भी हो सकती है कि अगर दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो भी ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा, लाइक बेंजल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड भी, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो व्हाट इज दिस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? So first, we will read this definition. The condensation of two different carbonyl compound, one of which must have one alpha hydrogen in presence of a base known as cross-aldol condensation. Now come to its example. Here mixture of compounds are formed. ठीक है, इसमें कोई फिक्स कंपाउंड नहीं बनता है, इसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बनता है। तो फर्स्ट आई विल टेक ethanol. Ethanol is acetaldehyde. Right, in the same manner as I discussed you in aldol condensation. शिफ्टिंग करना, स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल आई विल टेक एसीटोन। मतलब डिफरेंट डिफरेंट भी ले सकते हैं। इवन तो इसमें दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है बट बोथ आर डिसिमिलर in presence of a base contain OH minus। तो एज यू कैन सी कि इनमें अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर है। अगर हम सेकंड मॉलिक्यूल बात करें तो देख सकते हैं इसके कंपैरिजन में अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है तो एक अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट कर देंगे इस O के पास और डबल बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर। अगर ये प्रोसेस क्लियर है तो इसके स्ट्रक्चर बनाना कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। नाउ यू कैन सी व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म। तो हम देख सकते हैं ये जो CH3 ग्रुप है इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इसको तो वैसे ही लिख देंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे तो एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O बचेगा, लेकिन एक H को शिफ्ट कर रहे हैं तो ये ग्रुप OH ग्रुप बन जाएगा। जो बॉन्ड शिफ्ट किया था वो आएगा इस कार्बन और अल्फा कार्बन नेक्स्ट मॉलिक्यूल के बीच में, वहां से एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया तो एक दो बचेंगे। पहले इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दें और यहाँ पर बचेगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड से इट विल रिमेन एज इट इज। इसके बाद इसको हम हीट करके यहाँ से वाटर मूव कर सकते हैं तो हमारा वो सिंपली प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तो वो कंडीशन हो गई कि जब हमने एस्टल्डिहाइड को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, हमने पहले रखा था और बाद में हमने ये कीटोन ग्रुप रखा था। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स मींस कि अगर हम इसको इसकी प्लेस पर रखें और एस्टल्डिहाइड सेकंड प्लेस पर रखें तो क्या कोई प्रोडक्ट में चेंज आएगा? लेट्स वॉच। इफ यू प्लेस कीटोन ग्रुप फर्स्ट, कीटोन ग्रुप फर्स्ट, फर्स्ट मॉलिक्यूल को इस फॉर्म में लिखेंगे एल शेप में, बेटर रहेगा, टी शेप। एंड अदर मॉलिक्यूल जैसे हम अल्डोल कंडेंसेशन में करते थे कि अल्फा हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल को इस तरह एक्सपेंड कर देते हैं जिससे शिफ्टिंग इजी रहती है।
इस वे में। तो शिफ्टिंग करेंगे हम। शिफ्टिंग करने का रूल पता ही है कि अल्फा हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे O के पास और बॉन्ड को शो करेंगे कार्बनिक कार्बन, सॉरी अल्फा कार्बन और फंक्शनल ग्रुप कार्बन बीच में, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, in presence of base, what product will form? First CH3 will remain same. Now come to second alpha, second carbon of functional group C, single bond O will let H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और एक नीचे CH3 में. Now remainings जो बाकी एज इट इज नोट कर देंगे. C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H. अंडरस्टूड. तो इस तरह से ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया. हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट में चेंज हो गया है. अगर नेमिंग भी करेंगे तो नेमिंग रूल में थोड़ा डिफरेंट आएगा. Here is डबल बॉन्ड. तो इस तरह से हम इसको अगर नेम करें तो क्या नेम आएगा इसका. काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 एंड 4. तो थर्ड प्लेस पर है हाइड्रोक्सी ग्रुप और मिथाइल ग्रुप दोनों है. तो 3 हाइड्रोक्सी 3 थर्ड प्लेस पर मिथाइल भी लगा है. 3 मिथाइल जहाँ हाइफन लगेगा यहाँ पर मिक्स हो गया नेमिंग में. 3 मिथाइल 4 कार्बन का वर्ड रूट होता ब्यूट. सभी सिंगल बॉन्डेड हैं. ब्यूट एन ब्यूट एन और फर्स्ट प्लेस पर अल्फ. So these are the two compounds. Beside these, two more compound will form. How? How two more compound will form? Can you judge? हाँ, तो टू मोर कंपाउंड कैसे बनेंगे. अगर हम एसिड एल्डिहाइड के ही दो मॉलिक्यूल लें, जैसे कि हमने एल्डोल कंडेंसेशन किया था. भाई एक अगर सोल्यूशन लेंगे तो उसमें ऐसे तो नहीं केवल दो ही मॉलिक्यूल होंगे. एसिड एल्डिहाइड के बहुत से मॉलिक्यूल होंगे. तो वो दोनों भी आपस में सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे एल्डोल की तरह से और इस तरह प्रोडक्ट बनाएंगे. सेम ऐसे कीटोन के दो मॉलिक्यूल करेंगे जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन किया था. यानी पिछले एल्डोल कंडेंसेशन की दोनों रिएक्शन भी इसमें इन्वॉल्व की जाएंगी. यानी इस तरह कोई रिएक्शन अगर आती है तो ये चारों कंपाउंड दिखाने पड़ेंगे. फर्स्ट इससे, दूसरा इससे, थर्ड बनेगा दो इथेनॉल मॉलिक्यूल लेकर और चौथा बनेगा दो कीटोन के मॉलिक्यूल लेकर. Have you understood these two reaction is the most important reaction of your board purpose. तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स को भी इससे एडवांटेज मिल सके. थैंक यू.